We have offices in around 60 countries now. It's a big organization. We have arrived in Pakistan, originally based in Melbourne. Our head office is based in Melbourne, and we are here in Pakistan since 2019. So हमारा फर्स्ट ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में 2019 में आया. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया. वी कुड नॉट एक्सपेंड, एंड अब हम बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं. हमारा रिसेंटली एक हैदराबाद का भी विजिट हुआ है. And at the end of the session, if we feel that if you need us to come to Mehran University Jamshoro, we can set up a time and we can meet you there to guide more. In the meanwhile, feel free to ask or call us after the session if you are keen to apply for any international university. It's a very quick glimpse of IDP offices in Pakistan and abroad. Okay, so why study abroad? So definitely cultural improvement, development, get to know a different culture, independent, flexibility, friends, different style of education and personality and career development, definitely. So these are the spots where you can see our offices are placed. IDP is a multinational company. It's the largest student placement company across the globe. We are the biggest and the only international company in the education sector of international university that is working in Pakistan. We have offices in 200 plus locations now, where we have a staff size of 6,500 people working across the globe. We are the top company in university placement in around 800 plus universities across all the regions जो आपको मैंने अभी बताए हैं. I repeat, Australia, New Zealand, UK, Ireland, USA and Canada. And apart from that, we are the co-owners of IELTS testing, which means just like British Council, एक अथॉरिटी है जो आइल्स के टेस्ट कंडक्ट करती है. इसी तरह से आईडीपी आइल्स इज अगेन इक्वल पार्टनर विद कैम्ब्रिज that is conducting IELTS in Pakistan and across the globe. So we have 200 plus universities in Australia, partner institutions, 130 plus in UK, and in other countries, it's a big list. So what we provide, the value addition services, apart from these services, we provide course and university counseling absolutely free of cost, visa counseling and support, some student essential services, जिसमें आपकी accommodation booking है, university payment transfer है, visa and travel services हैं, और प्री डिपार्चर ब्रीफिंग इन द कंट्रीज जहां आपको जाने से पहले इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ये एक छोटा सा एक आपके लिए इंफॉर्मेशन सेशन है. यू नीड टू विजिट द आईडीपी ऑफिस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. वी विल डू योर एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. वी विल गेट यू द ऑफर लेटर. एक्सेप्टेंस होगी, वीज़ा एप्लीकेशन होगी और आपका ट्रैवल होगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंट्री स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए मेरे कॉलीग राहील कुरैशी आपको इसमें ब्रीफिंग देंगे. ओवर टू यू राहील. Assalamu alaikum everyone. I'm Rahil Amjad and I'm senior counselor for Australia destination. I'll give you a brief about Australia today. Next. So here's a small video if we can play. So it's fine, you can move next. So what we cover about Australia. So today we'll cover about Australia and a brief about Australian education system and then the entry requirement, and we'll look through the application flow process
and how much is the tuition fee cost, or how much scholarship you can get in Australia. And then you'll have part-time working rights, and then what IDP offers you as their services. Next. So why a student should study in Australia? These are few facts and figure or unique selling proposition for Australia. So Australia has 4 cities that are classified as top livable cities in the world. So student can have a very good life exposure in these countries. Second point is the universities are globally ranked, which means if you are going to Australia, you are going to study in one of the top ranked universities of the world. So majority of the universities are publicly funded universities. So any university you are opting, there are very high chances it's a public university rather than a private university. Australian curriculum is very different. So it's based on practical and applied learning rather than theoretical basis. So most of your subjects, they are like having real-time application in terms of work integrated learning or maybe internship opportunities. So the curriculum is designed for practical exposure. So a student can work part-time while their studies in Australia. So you can work 48 hours per fortnight, which means you can work 24 hours per week while your studies. Once you graduate from Australia, the government offer you a post-study work permit, which means you can stay there and you can work, and the duration depends on your program. So it starts from 2 years and goes up till 5 years of studies. So Australia also offers you a professional year. So if you are an engineer or an IT graduate, after completion your studies, you can enroll for a professional year program in which your university or your organization from which you are doing professional year, they'll help you gain skills which are required for the job. There are many scholarship available in the universities. It ranges from 10 to 30% and goes up till 50% depending on your previous academic background. But yes, you can get opportunities for scholarships. Next. So it's a simple geography. Australia has 6 states and 2 territories. Among them, the largest state is New South Wales, then comes Victoria, and the smallest state is Northern Territory and Australian Capital Territory. Australia's capital is Canberra. Usually it's misconfused with Sydney, but the Canberra is the capital of Australia. Next. So weather-wise, Australia is similar to Pakistan, just like we have 4 seasons. So the weather is quite similar to Pakistan. So student moving to Australia, they feel comfortable like having a climate similar to Pakistan. So they have spring, summer, autumn, and winter. Next. So this is the map of Australia. As you can see, Australia land-wise, it's under top 10 countries worldwide. So majority of the states which we discussed earlier, and there's a breakdown of the universities as well. So the universities are very equally divided into every state. So for example, if you are going toward New South Wales, you will have a good number of universities there. And if you are opting for Western Australia, you will still have a good number of universities there. Next. So this is the qualification framework in Australia. So after completing year 12, which we can say A levels or intermediate, you enroll for either 3 or 4 year bachelor's degree. And once you complete your bachelor's degree, you can go for masters, which range from 1 to 2 year. And if any student who is looking for academic experience or working as a researcher, they can opt for masters by research or maybe PhD. So this is a simple framework like Pakistan and Australia. Next. So these are a couple of things which differentiate Australia with other destinations, including Pakistan. So number one is premium on independence, which means
You are not restricted by a teacher to do any task. So they follow an independent curriculum structure. So you have certain assignments, you submit it, you will get the marks. And if you don't submit it, teacher is not going to force you. But the drawback would be you will lose your points. So the curriculum structure is very independent. So it depends on the student whether he wants to study or not. And obviously, if you don't study, you will not pass the exams. Second point is the class timing are very less compared to US or Canada or Pakistan. So average student have like spend very less time in classes than in on their assignments or maybe practical learning. So they do offer self-study discussions, and there are very good system of libraries where you can spend your good time for studies. So teaching style is a combination of traditional and interactive groups. So this simply means that the focus is on the practical exposure. Next. So now coming towards what you can study in Australia. So the curriculum structure or the area of fields are very diverse in Australia. You can almost study any degree from Australia. So you name it and you will find the degree. So they have engineering degrees, they have business degrees, IT degrees. So in engineering, they have like almost every degree that is offered worldwide. So Australia does offer these degrees. Next. Coming towards the entry requirement. So if you have graduated from Pakistan, you must have 16 years of education, meaning 4-year bachelor's degree in order to qualify admission for masters. And ideally, this is the minimum requirement and it depends from university to university. You must have at least 2.5 CGPA or 60% in order to get admission in any university. So university having good ranking or maybe good reputation, their academic requirement might vary. For example, say a university like University of Melbourne, they require 3 CGPA to get into the entry. So it depends on your choice of university. So CGPA may vary. This is the minimum requirement. So second requirement is of English language proficiency. Ideally, you need to appear for IELTS or PT exams. If you are appearing for IELTS, you must score at least 6.5 bands, and any band should not less than 6. And since you guys are engineering students, so this is for your requirement, and for medicine, it's different. Now coming towards the deadline part, when a student can apply. So Australia has like 3 intakes. Major intakes are February and July, and there's a minor intake which is October. So you can apply at least 3 to 4 months before your commencement of classes, which simply means if your classes are going to start in Feb, you should at least apply in November or maybe December to to complete your process. So this is the simple process as discussed by Khurram earlier. So a journey starts from counseling, and then once student decided to apply, we submit application to university. And if you are successful in admission, university gives you offer letter. And then in some universities you go through GT assessment, and once you are done with your all conditions of offer, you go for offer acceptance. And once you accept your offer letter and pay your tuition fee, you apply for student visa. At the same time, you look for your accommodation as well. And once your visa is granted, you can avail IDP pre-departure services. Next. Now coming towards the cost part and scholarships. So cost is mentioned subject wise. If you are going for engineering or IT courses, so ideally your fees would be somewhere 26,000 to $40,000 per annum. And if you are from any other field, so the cost is mentioned.
It depends from university to university. So this is the range which you can look for. Living expenses, they are like $24,505, and you need to purchase your health insurance, which roughly costs you from 700 to 750 per annum. And you must have your travel expense, which roughly costs you for return ticket $2,500. This is the tuition fee. On top of it, you will get the scholarship from the universities. Now, these scholarship varies from university to university and your academic performance. So ideally, you can avail from 5% to 50%. So if you are having low CGPA, you can go for minimum scholarship like 5%, 10%, 15%. If you are having outstanding academic performance like very high CGPA, you can apply for 50% scholarship as well. Next. So as discussed earlier, while you hold your student visa, the government gives you right to gain full-time work, gain some work experience, and uh, you can earn part-time as well. So in Australia, you can work 24 hours per week while your classes or exams are going on. If your scheduled breaks like winter or summer, you can work full-time as well. These are few statistics. So in minimum wage rate of Australia, that is $23.23. So this is the minimum wage rate. So many students who are like having experience like 2-3 months or maybe 6 months, they go for higher wage rate as well. Next. So these are student essential services for Australia, which only we offer in Pakistan. So neither of the companies in Pakistan having student placement service, they don't offer these services. So at first, we help you arrange health insurance from health insurance providers in Australia. We help you open your bank accounts before even leaving Australia. We help you transfer payments from your local bank account to your university. And we can also help you for accommodation services as well. So a couple of other services, they are like based on requirements. So if a student is under 18, we help them arrange guardianship as well. So next. Next. So now I'll invite my colleague Daniel to give you information about UK. Thank you so much, Riley. Okay, I'll try to keep it short and concise. Let's start with a brief introduction. My name is Daniel Sheikh, and I look after the UK destination. Uh, First of all, I would like to highlight about the UK. Can you please change the slide, Anish? Thank you. Okay, so the United Kingdom basically is a union of four nations. Most of the people still get confused when they hear about UK. All they think is England, or more specifically, they talk about London, but they don't know that it's a culmination of four countries. Like, so they all have a different education system, yet they are similar, but very slightly different. And these are few of the facts which I want to talk about. Okay, so education is basically the top contributor of UK's economy, which is why they invest heavily and they have very strict standards of education, you know, to maintain the overall standard and to enhance the student experience. So over 500,000 applicants come to UK for further studies, which makes UK the second largest, education system in the whole world. And it is, in fact, the oldest education system in the world. I'm sure a lot of you might have heard about University of Cambridge and University of Oxford. These universities are nearly millennium old, like 1,000-year-old universities, right? Uh, let's talk about the overall weather. In summers, the average temperature is like 9 degrees to 18 degrees, which is pretty normal. And maximum, it goes up to 30 degrees. If we compare it to Karachi and Hyderabad, it's quite,
uh, moderate. And similarly, in winter, the average temperature is between 2 to 7 degrees Celsius. So it's not that cold, not that hot. The overall population, as stated, it's 67 million, which is almost 6 crore 78 lakhs. And it is the sixth largest economy of the world. Okay, can we please change the slide? So here's a short map. Uh, okay, another fact that students don't know about is that Ireland is basically divided in two halves. One half is with Europe, which is called Republic of Ireland, and the other half is with the UK, which is called the Northern Ireland. Next, please. Okay, as I discussed, that education is one of the top contributors of UK's economy. So they rely heavily on international students, and that is why they have strict standards to maintain their reputation and to enhance the overall education experience. So if we talk about, can we, Danish, move to the next slide, please? If we talk about if we talk about UK from students' perspective, basically, UK is quite popular when it comes to international students. Why? Because a lot of students, they prefer that the study duration should not be too much. Like they prefer a short duration. So the good news is that UK has a 1 year master's degree and a 3 year bachelor's degree. I'll still focus on a master's. Uh, so it's a 1 year master's degree. It means that you'll spend your less money, and eventually the cost of your education would be less. And when we talk about the diversity, there's an interesting fact that over 300 languages are spoken in London alone. So it's a very diverse country, and you'll have a very good time. Yeah. So a lot of students come to us and ask about the part-time opportunities and post-graduation work permit. So UK allows 20 hours per week to international students, so they can work part-time and pay their bills. And once you graduate, UK is offering 2 years of post-study work permit. It means you'll have an opportunity to stay in the UK and work for 2 years. And it is well connected. It is well connected with Europe. So you'll have a very, good experience if you want to travel as well as enjoy your studies. Yeah. So the Europe is very, nearby. Please. Uh, Okay, just to give you an idea how much it costs to study in the UK. So basically, the fee range varies. It starts from approximately £12,000
and goes up to 28,000 pounds. So the bare minimum you can expect in PKR would be around 40 to 45 lakhs, and it goes up to 95 lakhs per annum. And the living cost, London is slightly expensive. So you can see the expenses for London are slightly higher than the rest of the cities in the UK. If we talk about the intakes, so UK is basically offering 2 intakes in 1 year. The major intake is September 2024, and these are the deadlines. The undergraduate applicants normally apply through UCAS, which is a platform for students to submit their applications. With one click, they can submit their applications in up to 5 universities. And for postgraduate students, the deadlines vary from university to university. But if you want to apply for September, we insist that you apply as early as possible uh, to secure good scholarships as well. And they also offer January intake, right? So, and the deadlines for January intakes normally October, November. So, next slide, please. Okay, so let's talk a bit about Republic of Ireland. As you can see, it is ranked third on Global Peace Index 2022. It's safe, friendly, and welcoming. And it is the only and the largest English-speaking country in the Eurozone. And population is not that much. In fact, Ireland is known to be the second largest exporter of IT services in the world. Yeah. So they do offer a 2-year graduate work visa post studies. Next slide, please. Okay, so these are some of the facts. Out of Ireland has more than 1,500 multinational companies, including IT companies, gaming companies, pharma, diagnostic, medical devices, and leading financial firms. Next. Okay, so the fee range, it starts from 11,000 euros and goes up to 25,500 euros for undergraduate. And for masters, it goes from 11,000 till 35,500. The annual expenses or living cost, you could say, is approximately 7,000 to 12,000 per year. Again, if we talk about the intake, the major intake is September 2024 for both undergraduate and postgraduate. Thank you. Now we move towards Canada, and I'll let Mr. Omar join in, please. अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. My name is Umar Sheikh, and I help people like you study in Canada or in USA. So let's start. Next slide, please. Next. Next. Okay, so Canada basically second largest country है by area. So okay, no, आप आगे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सो कनाडा बेसिकली जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, देखिए वन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट, जिस तरह से आपने देखा कि वो आपकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है एजुकेशन के अंदर, जिसका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और इनोवेटिव और अबेंडेंट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड करता है। एक्साइटिंग कैंपसेस हैं, लाइफस्टाइल इसका बहुत अच्छा है और सबसे मेजर जो अपॉर्चुनिटी आपको देता है इमिग्रेशन की। सो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन है इस टाइम पे कनाडा के लिए। सो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। ठीक है।
ठीक है। सो अगर हम कनाडा को समझना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज पे बेस करता है। सो जिसके अगर स्टूडेंट वाइज में देखूं तो मेनली जो अट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स की वो ओंटारियो ज़्यादा रहती है। ओंटारियो हो गई या आपकी ब्रिटिश कोलंबिया हो गई। मेनली ब्रिटिश कोलंबिया की साइड पे जो स्टूडेंट जो मूव करते हैं उनका मेन पर्पस होता है या उनका जो बेसिक उनको वेदर से अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो ब्रिटिश कोलंबिया की साइड पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे वैंकूवर वगैरह, वहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर रहता है। सो स्टूडेंट्स में इजीली अपने आप को कंफर्टेबली फील करते हैं और जो कनाडा का जिस तरह से वेदर है उससे वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। मगर जो अदर प्रोविंसेस हैं वो भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो कि प्रोविंस टू प्रोविंस और प्रोफाइल टू प्रोफाइल या रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं बेस कर रहा होता है। कैपिटल कनाडा का अगर मैं बताऊँ तो वो ऑटवा है। करंट पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 38 मिलियंस है, जिसमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा पार्ट रहा है इसके अंदर। और 825 700 मतलब 8 लाख तकरीबन आप 9 लाख कह सकते हैं जो स्टूडेंट इस टाइम पे वहाँ पे मौजूद हैं इंटरनेशनल। और प्लस वो ये मार्केट ग्रोइंग मार्केट है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। और आफ्टर आपको डिग्री या मास्टर्स या पोस्ट ग्रेड या अंडर ग्रेड के बाद आपको अप टू 3 इयर्स का PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वर्किंग राइट्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। सो देखें, बैचलर्स डिग्री जो है यहाँ पे वो 3 to 4 इयर्स के अंदर आपको ऑफर हो रही होती है, डिपेंड ऑन आपका प्रोग्राम और कोर्स को देखते हुए। अमूमन स्टूडेंट्स को मोस्टली 4 इयर्स की ही डिग्री यहाँ पे मिल रही होती है, जिसके ऊपर उनका PGW जो है वो अप टू 3 इयर्स उनको अलाउ करते हैं वो लोग एज एन कैनेडियन। जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनको अलाउ करती हैं। ठीक है। मास्टर्स जो है, मास्टर्स दो टाइप के इसमें ऑफर हो रहे होते हैं। एक आपको एक थीसिस बेस्ड ऑफर हो रहा होगा और एक कोर्स बेस्ड ऑफर होता है। ठीक है। लेंथ सेम 1 to 2 इयर्स के अंदर डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपके कोर्स के ऊपर। और साथ ही साथ एक और भी इसका एक पार्ट है जिसे हम PGD और PGC के नाम से जानते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन। सो ये इस इन प्रोग्राम्स को भी आप देख सकते हैं अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप एक स्पेसिफाई देखना चाह रहे हैं कि हमें जॉब स्पेसिफिक कोई इस तरह के प्रोग्राम मिले जो डायरेक्ट आपको जॉब के ऊपर एक एंट्री प्रोवाइड करें, या आपको एक डायरेक्ट जैसे आप ये डिप्लोमा आपने कंप्लीट करा और जॉब की साइड पे आप जाना चाह रहे हो। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। 1 to 2 इयर्स इसकी प्रोग्राम लेंथ होती है। नेक्स्ट। ओके। सो इसमें 3 इंटेक्स आपको ऑफर होते हैं, जिसमें फॉल, स्प्रिंग एंड समर। यानी कि फॉल आपका सितंबर अक्टूबर हो गया, स्प्रिंग आपका जन फेब हो गया और समर मई जून हो गया। सो मेनली जो कोर्सेज हैं या मेनली जो स्टूडेंट्स फोकस करते हैं वो फॉल को भी कर रहे होते हैं, जैन को भी कर रहे होते हैं। और समर के लिए मेनली जो ओपन रहते हैं वो रहते हैं फॉर डिप्लोमा के लिए। जो PGD या PGC के लिए जा रहे होते हैं वो उनको मोस्टली टारगेट करते हैं। और लोग ये सारे मास्टर्स और जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं वो इन तीनों ही इंटेक्स में आपको मिल जाते हैं। मगर ज़ाहिर सी बात है मेजर और एक स्मॉलर इंटेक पर उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट। ओके। सो अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक यानी कि फॉल इनटेक को टारगेट करता है तो उसका प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। उसने दिसंबर से लेकर मार्च तक अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई या लाइन अप करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेक्स्ट आफ्टर मार्च आपको मेनली एक्सेप्टेंस आना शुरू होती हैं और वही इस तरह से फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। आपको ऑफ़र रिसीव होती है, ऑफ़र के बाद आप वीज़ा फाइल करते हैं। जून जुलाई मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम चल रहा होता है। और फिर अगस्त में आप डिपार्चर अपना ले सकते हैं, जिसको भी उसका डिसीजन अथॉरिटीज़ की तरफ से ग्रांट हो जाता है। वो मेनली अगस्त और सितंबर के अंदर मूव यहाँ से करते हैं। ओके। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर देखें, मेनली जो आपकी एकेडमिक्स और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिग्री एंड सर्टिफिकेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स वगैरह ये आपको रिक्वायर्ड होंगी अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अगर आप O लेवल या A लेवल के बाद या आप इंटरमीडिएट के बाद अगर आप कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली उसकी जो रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं सो वो उसको यूटिलाइज करते हैं। रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि रिकमेंडेशन लेटर्स में हमें यूनिवर्सिटी मेंशन करनी चाहिए
या नहीं करनी चाहिए, या हम इसमें क्या लिखवाएं अपने टीचर से, कोई फॉर्मेट होता है। देखिए मेनली अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम आईडीपी के तौर पे हम इनको ये रेकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 2 एकेडमिक्स और 1 वर्क प्लेस से अपने रिकमेंडेशन अपने पास अरेंज करके रखें। और यूनिवर्सिटीज़ उसके ऊपर मेंशन करने का ऐसा कोई नीड नहीं होती, क्योंकि देखें हम मल्टीपल अप्लाई कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप उसको एक जेनरिक लगते हैं जिसको आप हर जगह यूटिलाइज कर सकें। मेनली तो आपकी जो प्रोफेसर्स या आपकी टीचर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वही आपके लिए काफ़ी होती है। मोस्टली जो आपकी एप्लीकेशंस होंगी उसके अंदर आप अपने टीचर्स की ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसके अंदर आपका पर्पस वाई दिस कोर्स और वाई दिस यूनिवर्सिटी स्पेशली मेंशन हो और अच्छे से लिखा गया हो, ताकि आप अपनी बात अपनी अपने इंस्टीट्यूट को एक प्रॉपर वे में उनको डिलीवर कर सकें, जिसकी ब्याह पे आपकी जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस जो बन रही होती है वो उस पर बहुत डिपेंड करती है। साथ में एक वेल डिज़ाइन रिज्यूमे हो जिसके अंदर आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके हैं कोई, तो वो उसके अंदर विद डिस्क्रिप्शन हो, ताकि आप अपने इंस्टीट्यूट को बता सकें कि जिस कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं वो आपसे किस तरह रिलेटेबल है और वो आपको इन फ्यूचर किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करेगा। इन दी एंड पासपोर्ट एंड आइल्स, आइल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं एज पर प्रोग्राम हम देख सकते हैं। अगर जनरल रिक्वायरमेंट होगी, जनरल तकरीबन 6 ईच, और ओवरऑल 6.5 मिनिमम आपकी होनी चाहिए। ओके, सो कॉस्ट पर ईयर में हम देखते हैं कि जो हमारी पीजीडी या पीजीसी हैं उनकी कॉस्ट पर ईयर आ रही होती है $15,000 टू $20,000 कैनेडियन। ओके, और मास्टर्स के लिए हम देखते हैं कोर्स वर्क में जो 25 से लेके $65,000 पर ईयर के ऊपर हमें फीसेस देखने को मिलती हैं। ये वैरी करती हैं हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को देखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जितनी हाई होगी उसकी फ़ीस उतनी ही आपको डिफरेंट या हाई देखने को मिलेगी। सो मास्टर्स इन थीसिस भी आप देख सकते हैं 18,000 टू $14,000। अच्छा, एमबीए थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पे आपको दिखता है, जैसे कि 30 से 65 के बीच में। और ये मोस्टली मोस्ट इन डिमांड भी रहता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसकी साइड पे देख रहे होते हैं, तो उसकी फ़ीस 30 से आपको 65 के बीच में मिल जाती है। ओके, सो लिविंग कॉस्ट डिपेंड करता है मोस्टली हमारा प्रोविंस टू प्रोविंस, मगर ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो आप 8 to 10,000 एनुअली, या अगर आप इसको इंक्रीज भी करें 12,000 तक भी आप देख सकते हैं। मेनली ओंटारियो साइड पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और अगर शेयर्ड अपार्टमेंट होगा तो आपको ये कॉस्ट पड़ जाती है ऑलमोस्ट 400 टू। एक सेकंड प्लीज़ वेट कीजिएगा, सॉरी। ओके, सो लिविंग एक्सपेंस के बारे में आपको बता रहा था कि उसके अंदर आपको, अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको मिनिमम 500 to 700 या 400 to 700 का एक अमाउंट आप रख सकते हैं जो आपको पर मंथ बेस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे इंटर्नशिप्स एंड को ऑप अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये मोस्टली प्रोग्राम्स आपको देखेंगे जिसके अंदर को ऑप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ये मेनली आपका फोकस करता है आपकी जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम, ये वन ऑफ द पार्ट होता है। तो ये उसमें उसके लिए स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यूबल होता है। अच्छा, मोस्टली ये आपको इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ऊपर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। सारे प्रोग्राम्स के लिए नहीं होता है ये मेनली चंद प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर ये आपको ऑफ़र हो रहा होगा, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप यही देखेंगे कि ड्यूरिंग अगर एजुकेशन या ड्यूरिंग आपकी डिग्री या आपका डिप्लोमा आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप डायरेक्टली आप इंटर्नशिप्स या उनके वर्किंग एक्सपीरियंस को हासिल कर सकें और उसके उसका एक्सपोजर ले सकें, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल हो सकता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट।
स्टडी परमिट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जब हमने वीज़ा फाइल करना होता है तो हमें बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है एज़ पर आईआरसीसी, वो हमें फुलफ़िल करनी होती है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होता है एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम योर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। सो जहाँ वेदर वो यूनिवर्सिटी हो या आपका कॉलेज हो, सो ये दोनों चीज़ें ही वहाँ पे आपको सूट करती हैं। आपको एक्सेप्टेंस लेटर आपको वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। एक वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना चाहिए जब भी आप वीज़ा फाइल करेंगे, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट आप नीचे अगर आप देखेंगे, सो आपको बेसिकली अपनी जो फाइनेंशियल्स हैं वो उनको क्लियर करके बतानी होती है, यानी कि आपके पास वहाँ पे एजुकेशन के और लिविंग या अकोमोडेशंस के आपकी जो फाइनेंशियल्स है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक अदर कंट्रीज ऑब्वियसली। सो ये सेम यहाँ पे भी चलती है ये चीज़। नेक्स्ट। ओके। वर्किंग वर्क वाइल स्टडी। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टूडेंट लाइक बैचलर्स पे हो या मास्टर्स पे हो या इवन पीजीडी या पीजीसी के लिए हो, सो उनको अथॉरिटीज़ वर्किंग राइट्स देती हैं फ्रॉम फर्स्ट डे। आप जैसी आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है तो आपको 20 से 30 आवर्स अप टू अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने लिविंग एक्सपेंस के को कंप्लीट करने के लिए या उसे फुलफ़िल करने के लिए अब वहाँ पे काम कर सकते हैं, जो कि वीकली बेस पे होगा ऑब्वियसली 20 से 30 आवर्स। मोस्टली प्रोग्राम्स आपको करते हैं, मगर इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि इसके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसके अंदर आपको वर्किंग राइट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सो मोस्टली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप उस साइट पे देख रहे हैं या अगर आपको इसके ऊपर कोई काउंसलिंग भी चाहिए, तो हम यहाँ पे आप अवेलेबल होते हैं आपको इसमें हेल्प करने के लिए। आपके लिए एक करेक्ट प्रोग्राम और करेक्ट इंस्टीट्यूट आपको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर, जिस पे आपकी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट हो, जो स्टूडेंट को बेसिकली हेल्प करता है ड्यूरिंग स्टडीज़। नेक्स्ट। ओके। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो हम इनिशियल या जब हमारी स्लाइड स्टार्ट हुई थी, सो मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि अप टू 3 इयर्स का आपको आफ्टर मास्टर्स और ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। सो ये आप देख सकते हैं, अगर आपका प्रोग्राम 8 मंथ लेस होता है तो उसके ऊपर कोई भी पीजीडब्ल्यू नहीं होता, जो मोस्टली आपकी ऐसे कुछ आपके सर्टिफिकेशंस आपको ऐसी मिल जाती हैं जिसके ऊपर पीजीडब्ल्यू पी नहीं अलाउ होता, क्योंकि वो लेस देन 8 मंथ्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। मोर देन 8 मंथ और लेस देन 2 इयर्स के ऊपर पीजीडब्ल्यू वैलिड होता है सेम प्रोग्राम लेंथ के ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोग्राम 14 मंथ्स का है या 16 मंथ्स का है, सो आपको सेम लेंथ के ऊपर आपको एटलीस्ट पीडब्ल्यू लोग ऑफर करते हैं। बेस्ट सिनेरियो ये होता है जिसका प्रोग्राम में 2 इयर्स और मोर होता है उसको 3 इयर्स का ऑफर हो जाता है। ठीक है। और अगर आप मोर देन वन प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीडब्ल्यू हासिल करने के लिए। मगर रिसेंट कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिसके अंदर स्पेशली मास्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ये कुछ प्रीवियस इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मिक्स है। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो ये जो मास्टर स्टूडेंट पे जा रहे हैं, वेदर उनका प्रोग्राम 1 साल का हो या 2 साल का हो, और प्रोग्राम लेंथ मैटर नहीं करती उनको, उसके ऊपर 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यू गारंटीड ऑफर करेंगी। ये जो पॉलिसीज एक्टिव हो रही हैं फ्रॉम सितंबर, तो जो भी अब स्टूडेंट सितंबर में मूव होंगे उनके लिए ये पॉलिसीज वैलिड रहेंगी। नेक्स्ट। ओके। सो FAQ, व्हाट इज इट द रिक्वायर्ड CGPA या GPA। ठीक है। मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमें इनके प्रोग्राम्स में देखने को मिलती है वो होती है एटलीस्ट 3 फॉर मास्टर्स, और बिटवीन 2.5 to 3 फॉर PGD और PGC। सो अगर आपकी CGPA 3+ है या 3 है एटलीस्ट, तो आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन होती है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रही होती है। फॉर PGD जैसे मैंने बताया, अगर आपकी CGPA मिनिमम 2.5 भी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन 3 हो 2.5 हो, तो वो भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टडी गैप की जहाँ तक बात है, देखें मिनिमम 5 to 7 इयर्स एक आइडियल स्टडी गैप होता है जिसके अंदर आप अपना पर्पस एजुकेशन को मेंशन कर सकते हैं या उसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा आपका स्टडी गैप होगा तो वो चीज़ फिर आपको फुलफ़िल भी करनी होगी और आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शो करने होंगे आफ्टर डिग्री।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका गैप 5 to 7 ईयर्स के बीच में है, सो बेस्ट केस है आप उसके ऊपर मास्टर्स के लिए या जिस प्रोग्राम के लिए वो इंटरेस्टेड हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. So any additional requirement when applying for masters or PhD? Okay, PhD, sorry. सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स देखिए मास्टर्स के लिए मैंने जैसे आपको सारी चीज़ें भी आई थिंक मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की. अच्छा, पीएचडी के लिए स्पेशली जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास प्री अप्रूवल हो सुपरवाइजर्स का. सुपरवाइजर्स का अप्रूवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपकी पब्लिकेशंस हो तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. आपकी एप्लीकेशंस को लेते हुए आपको एडमिशन या आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में आपको रिसीव होता है वहाँ से. ठीक है. रिलेटेबल आपका रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो बेसिकली जो आपका कोर्स है वो रिलेटेड हो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से या पास्ट डिग्रीज से, तो ही आपके जो चांसेस हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं. मास्टर्स में जीआरई और जी मैट की भी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है, और जो कि मेनली इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको वो ये रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है. हर प्रोग्राम में ऑफ नहीं होती, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी कर रही होती है, मगर मेनली यही प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स में आपको एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या मैकेनिकल हो गया, इसके अंदर भी वो आपको रहती है. कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप बात करेंगे सो आप डेटा साइंस के अंदर देख सकते हैं, एआई के अंदर ये रिक्वायरमेंट आती है. सो ये भी इसकी एक वन ऑफ द पार्ट है जो आपने कंप्लीट करना होता है फॉर एक्सेप्टेंस. ठीक है. सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर हम कनाडा देखते हैं तो हमें मैकगिल, टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा जैसी अपॉर्चुनिटीज़ ये डिफरेंट प्रोविंसेस में अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से ही है. सो ये भी हम देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 25th पे रैंक कर रही है, मैकगिल रैंक कर रही होती है. सो ये इनकी कहने का मकसद है कि इनकी रैंकिंग वाइज ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती हैं. जिस तरह से कॉलेजेस के सेट पे जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं लाइक फॉर पीजीडी और पीजीसी के लिए, सो वो कुछ कॉलेजेस में से भी देख सकते हैं, लाइक फैंशो है, शेरिडन हो गया आपका, जॉर्ज ब्राउन हो गया आपका, हम्बर हो गया. अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं. नेक्स्ट. ओके. स्टूडेंट एसेंशियल्स में जो हम आपको हेल्प करते हैं एज आईडीपी मनी ट्रांसफ़र के अंदर, ऑब्वियसली हम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स को एप्लीकेशंस के अंदर हेल्प चाहिए होती है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर सॉरी हेल्प चाहिए होती है, या अपनी फ़ीस और ट्रांसफ़र के लिए हेल्प चाहिए होती है, तो उसमें हम आपको हेल्प कर रहे होते हैं. अकोमोडेशंस में हम आपको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट. ओके. सो फील्ड्स ऑफ स्टडी इन कनाडा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकाउंटेंट, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, साइंस, आईटी और हेल्थ केयर स्पेशली. सो इंजीनियर्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं. सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं. सो इसमें कोई भी किस्म की आपको कमी नहीं होती किसी प्रोग्राम को ढूंढने में भी. नेक्स्ट. ओके. सो Thank you, Umar, for taking this through. Uh, there is a option in voting. If you would like to meet us at Mehran University, Jamshoro, in the days to come, तो इसमें please vote कीजिए so that we will be encouraged to visit Hyderabad and see you at Mehran University. So when we visit, we will counsel each of you in detail. That will help you to apply for your destination. Thank you. Okay, so if anyone who has not yet registered, they can register here, and all the registered students will be emailed the recording of the session. Next. So this is the IDP Study Abroad Expo coming to Karachi on Sunday, 25th of February. We will email you the details about that. So we will take your questions all in the chat. Okay, so take the screenshot of this. So अगर आप लोगों को हमें contact करना है तो these are the details, telephone number and email address, social media, and
Okay, so we will take your questions here now. So Rahil, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि what is the uh, future of students there? Talking about the future, जिस तरह English speaking countries हैं, Australia, UK, USA, Canada, they have very good structure जिसमें you can go for studies and then you can avail post-study work permit and then you can settle there. So there are very good opportunities. The main point is engineering, IT. So they are very high in demand. So skilled workers all from Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, they are very much appreciated in these countries because they have very much skill shortage in these areas. So they have very good demand for these occupations. स्पेशली अगर आप थोड़ा सा बता सकें एनवायरमेंटल साइंसेस, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर. So United Nations के accordingly they have 17 sustainable development goals जो कि वर्ल्ड वाइड जिन पे यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा काम करना चाहती है, जिसमें environmental is one of them. So you can go for Masters of Environment, Masters of Environment Management, and Masters of Environment Sciences. If you have PEC license from Pakistan, which meaning you have environmental engineering degree, then you can go for Masters of Environmental Engineering. So these are a couple of study options that you can look for in Australia, UK, and maybe Canada. Okay, can we do masters in fluid mechanics after having BS degree in environmental science? So for engineering degree, if you have completed bachelor's from Pakistan, you must have PEC license, then you can get admission in Masters of Engineering. Otherwise, you can go for sciences degree. Okay, there are a few more questions. Daniel is taking all the questions from the chat box. अगर आपके कोई और भी questions हैं तो please type in the chat box. और अगर अभी आपको बाद में कुछ याद आता है तो you can always write us. Shahid, I'm sure you're clear about the GPA criteria for Canada. Still कोई confusion है तो please. So just adding, there was one question that how much CGPA is required for scholarship. So it depends on what range of scholarship you are aspiring. So if you are looking for entrance based or maybe welcome based scholarship, they are usually from 10% to 30%. So for this very minimal C 3.7, maybe 3.8, or maybe 4 out of 4 CGPA. So these are like academic scholarship and you need to compete. So you must have higher CGPAs. Okay, Bisharat has asked कि English proficiency certificate अगर हम show करवा दें instead of IELTS. तो Rahil, would you like to answer, please? So technically the answer is no. You need to appear for IELTS or PT. So in Australia, there is only one university. They are offering you English language waiver based on your English proficiency letter. And it depends on your qualification. If you have very good CGPA and you have graduated from a good university of Pakistan, then you can avail this option. Otherwise, it's a standard requirement that either IELTS or PT, you need to appear any of the test and meet your English requirements. Thank you, Rahil. Ajaf, Fiza, you've asked in UK, the master's degree is about only 1 year. But if we have a BS of 4 years, then how can we do a master's here? फिजा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. आप यूके अगर मास्टर्स की बात कर रहे हो तो यस, यूके आपको 1 year का मास्टर्स ऑफर करता है. पाकिस्तान में अगेन डिफरेंट रेंजेस होती हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 year का, कुछ 1.5 year का और कुछ 2 years का ऑफर कर रही होती हैं.
Uh, Arja has asked, I have BE in electrical engineering. Can I do masters in software engineering? And she has a PEC license. Okay, Rahil, please. So ideally, a student who complete electrical engineering, they either go for Masters of Electrical Engineering or they go for Masters of Renewable or maybe Sustainable Engineering. So these are the common options. If you have experience as a software engineer after doing electrical engineering, then it's better you go for software engineering. Otherwise, as per the admissions requirement, they prefer either your work experience or your qualification. So they must be cognite, meaning if you have done electrical, you can go for electrical engineering or any subfield of electrical engineering. अच्छा अर्जुन वन मोर थिंग यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कन्वर्जन प्रोग्राम्स करवाती हैं इट मींस कि अगर आपने प्रीवियसली आईटी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं ली हुई है मास्टर्स के लिए तो आप मास्टर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस की कन्वर्जन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उमर वुड यू आई नीड योर इनपुट वुड यू लाइक टू शेयर प्लीज जी, अगर मैं अर्जा की क्वेश्चन को लेकर चलूँ तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रिकल, वो अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो ही सही रहेगा। मतलब कि जो हम यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसको मैच कर पाएंगे। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पाती, क्योंकि हम उनके जो प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज होते हैं हम वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, या एटलीस्ट हमारी जो प्रीवियस एजुकेशन होती है डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट में जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो उसको शो नहीं कर पा रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है इसमें, सो आप उसको आगे लेके चल सकते हैं फिर। If Fiza has asked about the PEC license, Rahil, do we have any input on this, please? So this is a local matter. So I can guide you generally. So you can apply on PEC website for their license if your degree is accredited and comes under PEC. So after registration, you need to pay a minimal fees and then you can get your PEC license from there. So I would recommend you to visit PEC website for more information. Thank you, Rahil. Guys, any further questions? We'll be happy to answer. Yep. So I think it's a great session. Thank you so very much, everyone, for joining us today. And we look forward to helping you more for your further studies. If you have any question or any information, you can feel free to visit us or write us or visit the IDP Expo. Thank you so very much. And we will share the recording over your social media channels. Thank you. Take care.